The scientific definition of adrenaline rush is a rapid release of adrenaline, a hormone produced by the adrenal glands, into the bloodstream in response to a stressful or an exciting situation. ये definition आपको मिलेगी अगर आप कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट या गूगल से ये सवाल पूछते हो. लेकिन अगर आप ये सवाल मुझसे पूछते हो, the guy who left biology after 10th because उसे अभी तक photosynthesis की spelling नहीं आती थी, मेरी definition of adrenaline rush is Stop that plane! Yep, ये वाला वीडियो इज अबाउट मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस. ओ हाँ, बाय द वे, PHOTOSYNETHIES फोटोसिंथेसिस. फक, जब मैं मेटल गियर की बात करता हूँ, दिस इज व्हाट यू इमेजिन द गेम प्ले टू लुक लाइक. सो व्हेन आई शो यू द गेम प्ले टू दिस गेम, आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि ये वाला कौन सा मेटल गियर का गेम है. एक तरफ जहाँ पे स्टेल्थ इज अ कोर एस्पेक्ट ऑफ द मेटल गियर गेम्स, मेटल गियर रिवेंजेंस वही स्टेल्थ के कोर एस्पेक्ट को लेता है, पुट्स अ कार्डबोर्ड बॉक्स ओवर इट एंड हाइड्स इट. ये गेम का डेवलपमेंट इन इट्स इनिशियल पीरियड वाज वेरी टफ, इवन दो कोजिमा प्रोडक्शंस ने इस गेम का एक प्रोटोटाइप भी रिलीज किया था व्हिच वाजंट हाफ बैड. लेकिन द डेवलपमेंट ऑफ दिस गेम वाज सो स्लो एंड टीडियस कि कोजिमा प्रोडक्शंस ऑलमोस्ट कंसिडर्ड कैंसिलिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस गेम. That's when the development of this game was outsourced to Platinum Games. I'm sorry अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है. There's nothing I can do about it. That's why I like to record at night, you know, at 3-4 बजे, जब सब नॉर्मल लोग सो जाते हैं और मेरे जैसे पागल लोग उठ के रिकॉर्ड करते हैं. But you know, you get what I mean. Platinum Games is the studio for action games. This studio is a master of this genre. Nier Automata and मेरा personal favorite series by Platinum Games, the Bayonetta series. And this is where a lot of people get it wrong. Hideo Kojima was not involved in the development process of this game. He was only the producer of the game. The entire development, पूरे game का development was done by Platinum Games. And man, did they deliver a masterpiece. The story of these Metal Gear games are, मैं नहीं बता पाऊंगा. I give up. Metal Gear Rising is the spin-off of Metal Gear Solid 4. लेकिन the thing with Platinum Games पता है क्या है? कोई भी Platinum Games का कोई गेम स्टोरी के लिए नहीं खेलता है. हर कोई Platinum गेम खेलता है सिर्फ 2 रीजंस के साथ. The first one being for those absolute cinema moments and second, the absolutely amazing gameplay. आप ये गेम खेलते हो as Raiden. ये कौन है? You play this game as Raiden, the second entry into my list of cool guy with white hair and a samurai sword. Virgil is giving him good company in that list. लेकिन Raiden is also the master of disguises. He beats Agent 47 any day. So you've got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Raiden also has a team of people helping him. Kevin, Courtney, Doctor and Boris, जो मेरा personal favorite है because you know, he said the line. Kept you waiting, huh? अब आप सोच रहे होगे कि राइडन तो सबसे कूलेस्ट कैरेक्टर होगा ये गेम का, लेकिन वेट टिल यू मीट द बैड गाइज ऑफ दिस गेम. Sundowner, who uses his blades like a pair of scissors but kinda looks like Mr. X when he wears a coat, which is kinda funny, but I'm pretty sure Leon would have still kicked his ass. Senator Armstrong, जो है Godfrey on steroids, और मेरा personal favorite Samuel Rodriguez और Jetstream Sam with his high frequency blade. Self-taught and not half bad. Still.
इस गेम का गोल है टू कट डाउन एवरीथिंग दैट यू सी. Cyborgs, cyborg dogs, machines, helicopters, trees, cars, boxes and posters. Yes, Tovarich. एक तरफ जहाँ Souls games which makes the player feel like your character has no right to kill this dragon but he is still fighting. Metal Gear Rising is like वो mech देख रहे हो? हाँ, तुम उसी को destroy करने के लिए बने हो. The gameplay of this game is very fast paced. जब मैं ये गेम खेल रहा था, पहले 2 चैप्टर्स खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि ओके, द गेम इज गोइंग टू रन आउट ऑफ स्टीम नाउ और अब थोड़ा रेपिटेटिव हो जाएगा गेम. लेकिन नहीं, द गेम कीप्स रेजिंग इट्स क्वालिटी चैप्टर आफ्टर चैप्टर आफ्टर चैप्टर आफ्टर चैप्टर एंड द क्रेडिट्स आर रोलिंग ऑन योर स्क्रीन. दिस गेम इज द डेफिनेशन ऑफ एन एक्शन पैक्ड गेम. द गेम प्ले इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस game. Now since it is a Metal Gear game, it does retain some of those classic Metal Gear elements in it, like using codec calls to save your game, the classic alert sound, the cardboard boxes, drums, and a bunch of great equipment, the jammer grenade, the EMP grenade. लेकिन मेरा personal favorite equipment है the 3D photo frame. I mean, गेम के कुछ सेक्शंस में आपको स्टेल्थ भी यूज करना पड़ेगा, लेकिन स्टेल्थ यूज करना इज एंटायरली ऑप्शनल टू द प्लेयर. और मुझे लगता है कि इतने अच्छे कॉम्बैट के साथ आई डोंट थिंक कोई भी स्टेल्थ यूज करने वाला है. थैंक गॉड स्टेल्थ इज ऑप्शनल. मुझे लगता है कि प्लैटिनम गेम्स को स्टेल्थ ऐड करना पड़ा जस्ट बिकॉज गेम का नाम मेटल गियर है. मैंने 1 मिनट पहले जब बोला था ना कि गेम प्ले इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गेम, मैं एक्चुअली गलत बोल रहा था. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गेम इज इट्स म्यूजिक. I think it's time for Jack to let her rip. The music of all the Platinum games is amazing. The music really helps elevate the boss fight. मुझे वो वाला बहुत पसंद है. Standing here, I realize. I should not sing. I mean, गेम का म्यूजिक इज नो डेविल मे क्राई 5 और डार्क सोल्स 3, लेकिन इस गेम का म्यूजिक इज वेरी गुड. एक्चुअली पता है, मैंने जब बोला ना दैट द म्यूजिक इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गेम, आई थिंक मैं फिर से गलत था. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गेम आर द बॉस फाइट्स. Like from the first boss fight against the Metal Gear to the final boss fight against Senator Armstrong, the quality of the bosses are incredible. Like आप में से कोई भी मुझे एक दूसरा गेम बताओ जिसमें द गेम का फाइनल बॉस आपको फुटबॉल की तरह किक करता है. Don't fuck with this, Senator! फिर खुद ही उठाता है, फिर हाथ मिलाता है और गले लगता है. I was wrong. You're not greedy. You're batshit insane! All the boss fight in this game are amazing. अगर बेस गेम ही इतना अच्छा है तो सोचो DLC कितना अच्छा होगा. एंड दैट इज ट्रू बिकॉज DLC में आपको खेलने मिलता है एज जेटस्ट्रीम सैम एंड ब्लेड वुल्फ एंड इट्स सो मच फन. मैं एडमिट करता हूँ DLC थोड़ा छोटा है गेम का. इट्स जस्ट 1 बिग मिशन विद जेटस्ट्रीम सैम एंड 1 बिग मिशन विद द डॉग. लेकिन ऑल इन ऑल बहुत मजा आएगा DLC खेलने में. Like this game is so much fun that I cannot count the amount of times you'll catch yourself saying this is so cool. अब आएगा बहुत cool बंदा. He's also pretty cool. Oh, he's so cool. Everything is so cool in this game. Very fucking cool. He's so cool. Like every guy in this game is less cool for no reason at all. You should also play this game for The memes. Memes. The DNA of the soul. The memes. Your memes. And here. No. I passed one. To you.
ऑनेस्टली अगर पहले आपने कभी कोई प्लैटिनम गेम नहीं खेला, आई हाईली रिकमेंड दैट यू डू, स्पेशली अगर आपको एक्शन मूवीज़ और एनिमे बहुत पसंद है तो। लाइक लोग बोलते हैं मेटल गियर राइजिंग इज़ अ प्लेएबल एनिमे, और मैं वो डिसएग्री भी नहीं करता, इट्स ट्रू। अब तो मैंने प्रॉबेबली 2 बेस्ट एक्शन गेम्स पे वीडियो बना दिया है, डेविल मे क्राई 5 एंड मेटल गियर राइजिंग। अब बस 2 ही गेम्स बचते हैं, 2B एंड बेयोनेटा। सो बस फिर अब सम अप करने के लिए व्हाई यू शुड प्ले मेटल गियर राइजिंग: द गेम प्ले, द बॉस फाइट्स, द म्यूजिक, द मीम्स एंड द DLC। एंड नाउ व्हाई यू शुडंट प्ले मेटल गियर राइजिंग? No, don't have one. Don't listen to calls, they suck.